Hello guys, welcome to Physiovigyan. Today we will be learning something about a condition called meningitis. As you can see, meningitis is made up of two words, right? So, meninges and itis. The meninges and itis. Meninges means the layers of our brain, right? The three meninges. But itis means inflammation. So what meningitis as a condition means, it is the inflammation of your layers of your brain, right? The inflammation of meninges. So inflammation of meninges of brain and spinal cord, because the layers go up to the spinal cord also, caused by any bacterial, viral, fungal. There could be many other causes also. So caused by any reason. If there is inflammation of meninges in your brain and spinal cord, it is known as meningitis. ठीक है? अब इसके causes देखते हैं. The causes could be bacterial, viral, fungal, parasitic, physical injury. If there is head injury, there is cerebral abscess, middle ear infection, cancer, certain types of drugs such as NSAIDs, right? So these could be the causes of meningitis. The risk factors which make you more prone to get that disease could be children below 5 years of age, because they haven't developed their immunity yet, so they are more prone to get the meningitis. Immunosuppressant drugs, if you're on chronic immunosuppressant, so some kind of bacteria and virus, even if it attacks you, which you can prevent, but you're on immunosuppressant, so your immunity will be down and you will be more prone to diseases such like this. AIDS, because AIDS is immunosuppressant disease, उसमें immunity बहुत कम हो जाती है. Then chronic alcoholism, अगर आप बहुत ज़्यादा drugs लेते हैं या फिर आप drink करते हैं बहुत ज़्यादा, तो that can also be a risk factor. CSF shunting, अगर shunting हो चुकी है CSF की, तो उसकी वजह से भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन आपको हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है. Pneumonia, systemic infection. So these are some of the risk factors. Now we will study about the pathophysiology of it. How meningitis occurs, right? First of all, there is a bacteria. Imagine there is a bacteria. It goes into my bloodstream because it won't directly enter into my brain somehow. It goes into my bloodstream. It could be by the injections, it could be a prick, it could be by GIT. Somehow it enters your bloodstream. Then it goes up to your brain and crosses the blood-brain barrier. If it doesn't cross the blood-brain barrier, it won't be able to affect the brain. So only bacterial या viral infections we get in the brain, they are which cross the blood-brain barrier. Blood-brain barrier is a oligodendrocyte barrier made by fats and cells, accessory cells of the brain, which prevents the inhalation or which prevents the incoming of many substances to protect our brain, right? So, which causes it starts or kick starts the inflammatory reaction in meninges. It is not considered meningitis yet. The virus or bacteria has entered the bloodstream, it crosses the blood-brain barrier, it reaches the brain or meninges and starts the inflammatory reaction, right? अब जब inflammatory reaction start हो गया, then the inflammation of subarachnoid space and pyometer occurs. After the inflammation of subarachnoid space occurs, there is rise in intracranial pressure because the CSF in subarachnoid space is increasing, right? If the CSF is increasing, the space is less. The space is similar as before, but the amount of fluid contained by the space is increasing. So the volume is increasing, but the space is exactly as before. So what will happen? It will increase the pressure inside the brain. So intracranial pressure would be increased. तो जो 3 cardinal size intracranial pressure के आते हैं वो भी show होंगे. Then due to the infection, the CSF becomes cloudy and infected, and there is increased in cell count. Neutrophils and your leukocytes, there is increase in those cells count in your CSF, and then it is known as meningitis because this whole inflammatory process is completed. So there is somehow subacute inflammation of your meninges. Now moving on with the types of meningitis, there are basically 5 types of meningitis.
based on their causes, right? So it is bacterial, which is also known as septic. This is more harmful and severe. It can be caused by, or the causative organisms could be your Streptococcus pneumonia, Neisseria meningitis. The second one is viral. It is also known as aseptic meningitis. This is less severe than the bacterial one, and it is lesser chronic. It is more acute, and this one is more chronic. It can be caused by enterovirus, adenovirus, and varicella. There could be other ones also. These are just examples of some. Now the fungal. This could be fungal meningitis doesn't occur if your immunity is strong or intact, right? It occurs only and only if your immune system is impaired. So in the cases when you are taking immunosuppressants, you have, or there are chances to have fungal meningitis. The next one is tubercular. When you have TB or someone who has TB, Mycobacterium tuberculei की वजह से हो सकता है. The next and last one is chronic meningitis. This could also be due to the TB, because TB is a chronic condition. So chronic meningitis could be due to TB, or if someone has tumor, cancer, or malignancy in their brain or spinal cord region. So these are the types of meningitis. Now coming forward to the signs and symptoms. There are various signs and symptoms, and also these could be confused with high increased cranial pressure and many other conditions, right? So how to, what are the cardinal symptoms? What are the classical signs? How to differentiate if it is meningitis or not? You get an MRI done, and moreover, the photophobia and phonophobia. These are the two things which are not seen in many other conditions. So if someone has photophobia or phonophobia, you can lean towards the meningitis. Moreover, even in the case of photophobia and phonophobia, this also occurs in the case of migraine, right? So this could also be your DD or differential diagnosis. So severe headache, irritability, restlessness, all the symptoms of increased cranial pressure are seen in the meningitis. Next, stiffness होगा, malaise होगा, मतलब general weakness होगी, nausea, vomiting सब होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, फीवर रिगर भी हो सकता है, सेरेब्रल एब्सेस भी देखने को मिल सकता है. नाउ बिकॉज योर ब्रेन इज बीइंग अफेक्टेड, यू कैन ऑल्सो सी पैटर्न्स इन योर टैकिकार्डिया, टैकिपनिया, इन योर हार्ट एंड इन योर ब्रीदिंग पैटर्न. Disoriented. In severe cases, the person can also go into a coma, or even in very very rare cases, death could even occur due to meningitis, right? So sleeplessness, photophobia and phonophobia, I think these are new terms, so I can explain them. Photophobia is when a person or the symptoms are exaggerated by seeing light or bright light. They cannot tolerate the light, right? And phonophobia is when they cannot tolerate or the symptoms are exaggerated by sound, large blaring sounds. And not even large sounds, even with smaller sound, the person is being irritated or irritable, agitated or aggressive. These are confusion, mental confusion. So these are some of the signs and symptoms of meningitis. If we talk about the diagnosis or the assessment part of meningitis, the assessment is same as the other neurological assessment, which we have talked about in many other videos, or there is a video of neuro assessment. So we can follow the same assessment pattern, but the differential thing or the classical thing which we do in meningitis, which puts it different from the other neuro assessment, is these two special tests, right? The Kernick sign or the Kernick's test or the Brudzinski sign. These two are seen in meningitis or sometimes in encephalitis. So Kernick sign में what you have to do is कि patient आपके पास bench पे या couch पे supine line में रहेगा, आप उसको 90-90 like this is the bench, this is your patient, तो hip would be 90-90, right? This is your patient. अब इस केस में आप क्या करोगे, पेशेंट को यू हैव टू आस्क द पेशेंट टू स्ट्रेटन देयर लेग, मतलब कि 90-90 से अब इस नी को कंप्लीटली एक्सटेंड करें हो. जब आप ये एक्सटेंशन कराओगे नी का या स्ट्रेटन करने के लिए कहोगे लेग विद योर हिप्स फ्लेक्स्ड अप टू द 90 डिग्री, उसमें क्या होगा, पेशेंट को रेजिस्टेंस फील होगा ड्यू टू द एक्सटेंसास टाइटनेस या न्यूरल टाइटनेस. अगर उनको ये रेजिस्टेंस फील होता है तो आपका टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है. लेकिन ये इतना ज्यादा डिपेंडेबल नहीं है,
वाई? बिकॉज हैमस्टाइटिस की वजह से भी हो सकता है, या और अदर पेल्विक रिदम की वजह से भी हो सकता है, और अदर फीचर्स भी हो सकते हैं इसमें, बट ये टेस्ट हम मेनिंजाइटिस के लिए करते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका ब्रुजिन्स्की साइन। ब्रुजिन्स्की साइन में हम क्या करेंगे कि इसी में या नॉर्मल सुपाइन लाइन में या सिटिंग में भी आप करवा सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि पेशेंट को आप बोलेंगे एक्टिवली या पैसिवली आप उसका नेक जो है फ्लेक्स करेंगे। ठीक है, जब आप पेशेंट का नेक फ्लेक्स करेंगे या हेड को चिन टक करने के लिए बोलेंगे तो उसमें क्या होगा कि हिप्स जो है वो रिफ्लेक्सिवली फ्लेक्शन की ओर आएंगे। ठीक है, हिप्स भी फ्लेक्स होते हैं। सो दिस इज मोर रिलायबल एंड दिस इज लेस रिलायबल। ब्रुजिन्स्की साइन ज्यादा रिलायबल है। जब नेक का फ्लेक्शन करेंगे तो हिप्स भी आपके साथ साथ फ्लेक्शन में आते हैं। ये आपका ब्रुजिन्स्की साइन हो गया। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो देयर कुड बी मल्टीपल कंडीशंस व्हिच कुड बी कंफ्यूज्ड, क्योंकि इतने सारे वाइड रेंज ऑफ साइंस एंड सिम्टम हमने देखे थे मेनिंजाइटिस में। बट ये कुछ कॉमन कंडीशंस हैं, जैसे कि सब अरेक्नॉइड हैमरेज, माइग्रेन, वायरल एंसेफेलाइटिस, सेरेब्रल एब्सेस, दीज कुड बी द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अब इसमें आपको साइंस एंड सिम्टम्स कोरिलेट करके डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना पड़ेगा, साथ ही साथ आप इन्वेस्टिगेशंस की हेल्प भी ले सकते हैं। नाउ द कॉम्प्लिकेशंस व्हिच कुड बी अराइजन, जो कि इसमें एक मेजर चीज नहीं लिखी गई है, दैट इज मेजर कॉम्प्लिकेशन कुड बी डेथ। इन सम रेयर केसेस इट कुड आल्सो लीड टू डेथ। So these could be sensory neural hearing loss, epilepsy, paralysis could be there, seizures could be there, memory loss, confusion, right? Septicemia, because क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो सेप्टिसीमिया आपको जनरल भी, सिस्टमिक भी या फिर सेरेब्रल भी देखने को मिल सकता है। एब्सेस इसका डीडी भी हो सकता है और साथ ही साथ इसकी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, राइट? नाउ द मैनेजमेंट पार्ट। मैनेजमेंट जो हम न्यूरो मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, पूरा प्रोटोकॉल बना के गोल वाइज उसी तरह से बनाएंगे, बट इसमें एक नोट करने वाली चीज है, हाईलाइट करके, कि वी डू नॉट प्रोवाइड मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एक्यूट स्टेज, या फिर जब एक्टिव मेनिंजाइटिस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, डू नॉट प्रोवाइड फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट in active meningitis, right? क्योंकि ये जो है आपकी कंडीशन को अग्रवेट कर सकता है और ज्यादा स्प्रेड भी कर सकता है, आपके टिश्यूज को और ज्यादा इरिटेट भी कर सकता है, तो इसकी वजह से कंडीशन वर्स हो जाएगी। तो हम मैनेजमेंट, जो ये हम पीटी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ये कब करवाएंगे? जब एक्टिव मेनिंजाइटिस नहीं है, मेनिंजाइटिस अब उसको ठीक हो चुका है, लेकिन जो पोस्ट मेनिंजाइटियल कंडीशंस रह गई हैं, सिम्टम्स रह गए, उसकी वजह से जो कंडीशंस या डिटीरियोरेशन आया है आपकी बॉडी में, उसको ठीक करने के लिए हम मैनेजमेंट देते हैं। दिस कुड बी नॉट इवन कॉल्ड एज मैनेजमेंट, इट इज रिहैब, राइट? पोस्ट मेनिंजाइटिस का रिहैब है ये। उसमें हम क्या क्या करा सकते हैं? स्ट्रेचिंग, क्यों? क्योंकि मसल्स की टाइटनेस हो रही है, राइट? तो आप इंडिविजुअल मसल्स की जो टाइट मसल्स है उनको असेस करके स्ट्रेचिंग करवाएंगे, पैसिव स्ट्रेचिंग करवाएंगे और स्लो सस्टेन स्ट्रेचिंग कराएंगे, बैलिस्टिक नहीं करवाएंगे। न्यूरोडायनामिक्स, क्योंकि न्यूरल टाइटनेस भी पाई जाती है और स्पेशली न्यूरल टिश्यू में ही पाया जाता है, तो उसकी वजह से हम न्यूरोडायनामिक्स कराएंगे। हम सबसे पहले स्लाइडर टेक्निक, ग्लाइडर टेक्निक का यूज करेंगे, फिर उसके बाद टेंशनर तक पहुंच सकते हैं, बट टेंशनर से आप स्टार्ट नहीं करेंगे, राइट? ग्लाइडिंग स्लाइडिंग का यूज करेंगे, टेंशनर का ज्यादातर यूज नहीं करेंगे। जब पेशेंट बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हो चुका है, अब हाँ उसकी न्यूरल टिश्यू काफी फ्लेक्सिबल हो चुकी है, तब आप जाकर के कर सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड द टेंशनर टेक्निक। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, क्यों? क्योंकि अब बहुत समय से हो सकता है कि आपका पेशेंट बेड रेस्ट पे हो या बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी हो, या फिर बहुत ज्यादा उसने अपने एडियल्स भी नहीं करे हो, तो उसको नॉर्मल पैटर्न पे या नॉर्मल एडियल्स तक लाने के लिए आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी करवा सकते हैं। द नेक्स्ट इज सीबीआर। सीबीआर इज व्हाट? क्रेनियोबेसल रिलीज। क्योंकि नेक की और स्काल्प की मसल की, फ्रंटालिस की स्टिफनेस या फिर हेडेक, हेवीनेस, ये सब देखने को मिलता है, तो उसके लिए हम क्रेनियोबेसल रिलीज भी दे सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। Balance and coordination exercises, of course if there was increase in intracranial pressure, balance and coordination हो सकता है कि आपका इफेक्ट हो, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इफेक्ट होगा, तो उस केस में हम बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस भी करवाते हैं, प्रिंकल्स एक्सरसाइज या वर्बल बोर्ड के साथ, या और भी एक्सरसाइज आप करवा सकते हैं।
एरोबिक ट्रेनिंग, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि टैकीकार्डिया, टेकिपनिया या आपकी ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन रेट, हार्ट पे भी फर्क पड़ता है, तो हम एरोबिक ट्रेनिंग भी करवाएंगे वापस से कार्डियक रिहैब के लिए या फिर रेस्पिरेटरी रिहैब के लिए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हम करवा सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप करवा सकते हैं, जैसे कि बेस्ड ऑन या फिर टेलर्ड प्रोग्राम बना सकते हैं। इंडिविजुअल सिम्टम अगर आपको कुछ अलग दिख रहे हैं पेशेंट में, तो उसके हिसाब से आप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को चेंज करेंगे। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके पेशेंट को बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम नहीं है या इनमें से कुछ ऐसी चीज की जरूरत नहीं है, तो आप उस हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। बट ये बेसिक चीजें थी जो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन बार बार बोल रही हूँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एक्टिव मेनिंजाइटिस में हम नहीं कराएंगे। दिस इज द रिहैब पार्ट, सो विल डू इट आफ्टर द मेनिंजाइटिस कॉजल थिंग इज डिसॉल्व्ड, उसके बाद करवाएंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।